Assalamu alaikum. This is Alia Hassan from IQ School of Finance. Students, we are back with the practice classes now. Practice classes में जो सबसे पहला टॉपिक मैं आपको प्रैक्टिस कराना शुरू करूँगी दैट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. If you remember, we started off our classes with reading comprehension और reading comprehension आपके पेपर का पहला क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन बहुत ईजी है if your skimming and scanning are both efficient. So let's get back to work. आज की क्लास में हम ये देखेंगे जो आपके स्टडी टेक्स्ट के आपको पैसेजेस दिए गए हैं उन्हें किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए प्रैक्टिस करने के लिए, और सबसे बड़ी बात इन पैसेजेस को स्किम और स्कैन किस तरह किया जाए ताकि आप अपने MCQs को जल्द से जल्द एफिशिएंटली कर पाएँ. सो लेट्स स्टार्ट विद 6.6 ऑफ चैप्टर नंबर 6 बिकॉज इससे पहले के जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं अगर आप उन्हें देखें सो दे आर मोर लाइक फॉर प्रेसी एंड फॉर अदर पर्पसेस, लेकिन 6.6 से आपका रीडिंग पैसेज स्टार्ट होता है. ठीक है, सो लेट्स रीड टुगेदर एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस पैसेज फॉर यू एंड वन मोर पैसेज फॉर यू. सो आज की क्लास में मैं आपको 2 पैसेजेस सॉल्व करके दिखाऊंगी एंड द रेस्ट ऑफ द पैसेजेस यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन एंड यू कैन सेंड योर आंसर्स टू अस. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग प्रैक्टिस. अगर आपको याद हो मैंने आपको रीडिंग के 2 तरीके सिखाए थे, एक स्किमिंग और एक स्कैनिंग. स्किमिंग में हम किसी भी चीज़ को सरसरी तौर पर रीड करते हैं इस तरह से कि हम उसके मीनिंग को ड्राइव कर लें कि ये पूरा पैसेज किस चीज़ के बारे में है, और उसके बाद हम ये अंदाज़ा लगा लें कि इस पूरे पैसेज में क्या बातें हो सकती हैं. स्कैनिंग दूसरा स्टेप है. स्कैनिंग एक डिटेल्ड रीडिंग प्रोसेस को कहा जाता है. स्कैनिंग में आप लाइन बाय लाइन हर चीज़ पढ़ते हैं और एक एक वर्ड को एनालाइज करते हैं बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द इन्फर्ड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. फ़िलहाल जब हम MCQ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किमिंग का प्रोसेस होता है बिकॉज वी आर टाइटली टाइम्ड एंड सेकेंडली वी हैव वेरी लिमिटेड फ्रेम to complete the whole task. So let's begin the task. Now if you see 6.6 is all about pressures of being self-employed. Now why I said so? Because it's very obvious. अगर आप इसकी पहली लाइन देखें तो इसका पहला सेंटेंस ही आपको बता रहा है the pressures of being self-employed are inescapable, which means कि हमें इस एक टॉपिक सेंटेंस या इंट्रोडक्टरी लाइन से ये अंदाज़ा हो गया है कि ये पूरा पैसेज सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में है और वो भी उसके प्रेशर्स को लेके. यू मे हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स एंड देयर विल बी टाइम्स व्हेन थिंग्स गेट ऑन टॉप ऑफ यू. यू मे वेल गेट इनटू डेट इन ऑर्डर टू फाइनेंस द एंटरप्राइज. यू विल नीड टू मेंटेन योर फेथ इन योर बिजनेस ऑफन इन द फेस ऑफ अदर पीपल्स डाउट्स. ये तो सारी जनरल इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में. Let's get to the next paragraph which is linked with another point related to the main point. There will be times when you will feel lonely and frustrated. If you employ people, you will need to be positive and show leadership at all the times. There will be times when you need to be tough and be prepared to discipline difficult employees or make difficult demands of your suppliers. You need to be polite and helpful even when an awkward customer is giving you a hard time. So this particular paragraph is all about one kind of situation which creates pressure for you, and that is how to manage the employees you have hired in your organization, and also to deal with the difficult kind of clients which gives you very hard and challenging time. Third, many of those who successfully start their own business have the backing of their family. Working long hours may have adverse impacts on your family life, and your family must be prepared for it. Also, you must be sure that your family can accommodate the risks that self-employment can bring, especially in terms of lower income in the initial stages and the serious implications if the business fails. You must take time to talk to all members of your family who might be affected by your decision to be your own boss. Now, this is all about another pressure which a self-employed person has to face, and that is family pressure. Now, how to
create a work-life balance in his or her life. That's very important, and that has been discussed here. This particular part is all about how your family has to face the equal pressure which you're going through when you are self-employed. So you need to make sure that you make them prepare mentally and physically that this is something which is going towards them as well, and this is how you need to create a work-life balance. Now the third and the last paragraph of this passage is going to talk about you need to ask yourself several questions before you intend to start your own business venture. It means that whether you are ready or not, ये वाला जो पार्ट है इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि एक इंसान को सेल्फ एम्प्लॉय या एक एंटरप्रेन्योरल स्टेप लेने से पहले अपने आप से क्या क्वेश्चंस करने चाहिए. Do you have the financial resources? And can you afford to risk them? For example, you might take a secured loan based on the security of your home. What are your plans if the business fails and you are forced to sell your house? Do you have sufficient experience and technical skills to perform the core functions of your new business? Are you knowledgeable enough with the market conditions to be able to assess its needs and adapt to its changes? Do you have the tenacity and discipline to see through hard times when cash inflows will be short and demands will be heavy from customers, bankers, staff, and crucially your family? Now this particular passage ends on a note of question. That doesn't mean कि ये आधा है या ये incomplete passage है. Sometimes some questions are rhetorical questions. Now when we are going to study essay writing, then I'll teach you rhetorical question. Rhetorical question is basically a thought-provoking question. एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में एक आइडिया डेवलप कर दे या एक सोच को उजागर करे, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपको इस क्वेश्चन को अभी आंसर करना है यस और नो में या फॉरन एक्सप्लेनेशन देनी है. ये क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपनी ही किसी एक्शन पे रिफ्लेक्ट बैक करें और अपने ही किसी सोच को रिफ्लेक्ट करके उसे एनालाइज करें और देखें कि उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो इस पूरे पैसेज में अगर हम इन 4 पैराग्राफ्स को डिवाइड करके देखें और इनकी टॉपिक सेंटेंसेस को खाली नोट कर लें, जो कि ये है, तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा. लेट्स गो टू द क्वेश्चंस नाउ. गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज. हमेशा याद रखें पैसेज का टाइटल उसके पहले पैराग्राफ में रिफ्लेक्ट हो जाता है और वो भी ही पहली लाइन में. तो अगर आप इस गौर से देखें, इसमें इन्होंने 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अ डेंजर टू फैमिली लाइफ. नो, दिस होल पैसेज इज नॉट जस्ट अबाउट फैमिली लाइफ. प्लानिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो समथिंग डिफरेंट. यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की प्लानिंग नहीं सिखाई जा रही. The pressures of self-employed, yes, you can say that. And pros and cons of self-employed, यहाँ पर pros की बात कम हुई है and cons ज़्यादा डिस्कस हुए हैं. तो ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, लेकिन हाँ, pressures of self-employment जो यहाँ पहली लाइन में ही बता दिया गया है, ये आप कह सकते हैं. Then come to the second question. Types of pressures as identified in the passage which are generally faced by individuals who choose to be self-employed vis-a-vis those who seek to work for others include. वो कौन से pressures हैं जो इसमें डिस्कस हुए हैं जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी को भी झेलने पड़ते हैं और एक किसी ऐसे इंसान को भी जो कहीं पर एम्प्लॉयमेंट में हो. Let's read the options. Getting into debt, letting things get on top and competition, maintaining faith in the business, working for long hours and law legislative issues, working for long hours, getting into debt and maintaining faith in the business, letting things get on top, globalization and social responsibility. Now, let's get to the points. Getting into debt, letting things get on top and completion, ये job मेंबर को कभी भी इशू नहीं आता बिकॉज कि ये उसका हेडेक ही नहीं है. उसको वहाँ से सिर्फ सैलरी लेनी है एंड दैट्स इट. सो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसे ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं. सेकेंड है मेंटेनिंग फेथ इन द बिजनेस, वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स एंड लॉ लेजिस्लेटिव इशूज़. किसी भी एम्प्लॉई को ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनी में काम करने जा रहा होता है, इसलिए ये उसके हेडेक्स नहीं हैं. थर्ड, वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, गेटिंग इन टू डेट एंड मेंटेनिंग फेथ इन द बिजनेस could be one of the options.
Letting things get on top, globalization and social responsibility is also not employees' problem because they can switch job if they think the company is not doing well. So here also the answer is 6. Now moving forward, the 4 qualities in the context of this passage which are vital for success of self-employed person, यानी कि वो 4 qualities जो इस कॉन्टेक्स्ट इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में बताई जा रही हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या यूज़फुल होती हैं किसी भी सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान के लिए सक्सेसफुल बनने के लिए, वो क्या हैं? लेट्स चेक. Positive attitude, leadership, polite to customers, and disciplining difficult employees. I think these are the things which have been discussed. Let's see the other options. Ability to make difficult demands of suppliers, autocracy, experience, and being knowledgeable. इसमें से कुछ तो हैं बट कुछ इसमें डिस्कस नहीं की गई. Experience, financial strength, market gap, and prejudicial treatment at workplace. इसमें से भी एक आध हैं, बाकी नहीं. Financial strength, technical skills, competent staff, and motto of self-discipline at work. That's also not one of the options available. So I think A is the option where you can see positive attitude, leadership, polite to customers, and disciplining difficult employees. ये सारी चीज़ें हमने discuss की. Let's go to the next part, which is all about how can self-employment disturb one's family life. ये हमने second पैराग्राफ में अच्छी तरह देखा था. लेट्स सी. इफ द बिजनेस गेट्स सक्सेसफुल, एक्सपोजर टू अ हायर लिविंग स्टाइल माइट गेट यू टू फार फ्रॉम द नेचर, नेवर डिस्कस्ड इन इट. अ ग्रोइंग बिजनेस इज लाइकली टू कॉल फॉर लीगल इम्प्लीकेशंस, ये भी बात नहीं की गई या फैमिली लाइफ से रिलेटेड नहीं है. Working for long hours can eat up the time to be given to the family. Yes, this is something applicable. And number 4 is handling difficult workers might end up in legal suits. So only 3 is applicable to family life. Otherwise, the other 3 are not applicable to family life. I hope कि आपको ये चीज़ समझ आई कि मैंने इसे किस तरह solve किया. Now, if we get back to the points, now it's very difficult to read each and every line every time we read the questions. The best way to understand the passage is read it once but in a very very clear way. इस तरह से कि आपको उसमें कही गई हर बात समझ आ जाए. अगर आपको एक एक पैराग्राफ तोड़ के पढ़ने में आसानी हो रही है, do that. अगर आप पूरा एक दफ़ा पढ़ते हैं और आपको बात समझ आ रही है, that's well and good. But I would suggest to my students that read paragraph wise and try to understand each concept discussed in particular paragraph. Because every paragraph carries only one point and the further details are the explanation of the same point. And all the points are going to connect with one local point, or you can say the main point, which is given in the very first paragraph's first line. I hope you understand 6.6. Now we're going to move towards 6.7.